Good morning to all. Welcome to my channel again. Myself Ovik Roy and your mathematics teacher, and hope you are all fine. And in this quarantine days, I think this days is actually is going on. So in these days, we are going actually through the different chapters, and in this in various videos the relation chapter was covered, and today we are going to start a new chapter, and that is the function chapter. It is not actually the new chapter, this is the relation function chapter actually. Okay, this is the relation is the first part and the function is the second part. Okay, so in this function chapter in class 11, I think you all have studied different types of functions. Okay, so this type of what type of functions, just like your constant function, logarithmic function, exponential function, smallest integer function, greatest integer function, and then signum function, etc., etc. In class 12, okay, there will be many more functions will be there. So here you can see there are different types of functions in class 12 also. Just you can see the function names, greatest integer, smallest integer. Just we will discuss these two functions again, because these two functions is very important function. Greatest integer, smallest integer, one function, many one function, into function, onto function, bijective function, surjective function, injective function. Okay, so in this video all the functions will be discussed. Okay, so this video is going to be longer, so anyhow we have to manage in one video class actually for all the definitions and the discussions as well. Okay, so here in this function chapter, okay, in our last video, I think in lecture number 6, I will give the link in description also. Just you can see the link and you can see the video also. Lecture number 6. In lecture number 6, I discussed about the relation and function, the difference between the relation and function. What do you mean by relation and what do you mean by function actually, and what is the basic difference between the relation and the function. Both are mapping actually. Okay, so यहाँ पर देखो ये इन फंक्शन भी एक मैपिंग ही है. सो हम लोगों ने क्या बोला था कि फंक्शन में क्या होता है. सपोज रिलेशन में दोनों में ही दो सेट चाहिए. सो फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट का मैपिंग होगा. ठीक है, और रिलेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट के साथ हजारों एलिमेंट्स का मैपिंग बन सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. ओके, बट फंक्शन में क्या होता है, एक यूनिक मैपिंग ही होगा. ठीक है, जैसे सपोज नॉर्मली जब हम लोग फंक्शन जैसे घर पे करते हैं, ये आज मेरे घर पर फंक्शन है. अब फंक्शन है, देखो यहाँ पर फंक्शन है मतलब क्या है, उसमें कुछ लोग आएंगे, उन लोगों को तुम खाना खिलाओगे, वो खाने का फीडबैक देके जाएगा तुम्हें. ठीक है, फीडबैक. ओके, दिस फीडबैक, जस्ट रिमेम्बर दिस वर्ड. सो ये जो तुमने फंक्शन बोला है, फंक्शन करने के लिए तुम्हें कुछ इनपुट देना पड़ता है और कुछ आउटपुट निकलेगा. ठीक है, इनपुट देना पड़ता है मतलब क्या, जो खाना तुम बनाओगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स तुम्हें चाहिए. ठीक है, उसके बाद खाना बनेगा, खाना बनने के बाद लोग खाना खाएंगे, उसके बाद खाने का फीडबैक देके जाएंगे तुम्हें, नहीं आज खाना बहुत अच्छा बना. दैट मीन्स ये जो फीडबैक है वो आउटपुट है तुम्हारा. ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कोई भी फंक्शन हो, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया था लेक्चर नंबर 6 में, जैसे ये रेगुलेटर में रेगुलेटर का एग्जांपल मैंने दिया था कि फैन का स्पीड कैसे बढ़ता है. जस्ट लेक्चर नंबर 6 को तुम लोग ठीक तरह से देखो, वहां पर हम लोगों ने एकदम इलेबोरेटली हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में. ठीक है, तो वहां पर बेसिक मैंने बोला था. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दैट मीन्स फंक्शन में क्या चाहिए, एक इनपुट और एक आउटपुट. ठीक है, अब फंक्शन में इनपुट का नाम क्या बोला जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है इनपुट को, और आउटपुट को fx. ठीक है, दैट मीन्स देखो ये जो सब तुम लोग लिख लो, वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद. अच्छा, यहाँ पर लिख लो फंक्शन क्या होता है, दो सेट होता है. जैसे सपोज ये ए सेट है और ये बी सेट है सपोज. ठीक है,
तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था कि जो ये रेगुलेटर में जब 1 2 3 4 5 सेटिंग्स होता है, 1 2 3 4 5 सेटिंग्स होता है, जैसे कि तुम लोग जानते हो, एज यू ऑल नो दैट इन द रेगुलेटर देयर एक्चुअली used to be taken as the division actually 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर जैसे ये इनपुट सेट है, तो इनपुट सेट में जो जो एलिमेंट्स रहता है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये होता है आउटपुट। अब रेगुलेटर में तुम कुछ सेट करोगे, 1 सेट करोगे, फैन का स्पीड तुम्हें कुछ मिलेगा, वो हम लोगों ने दिया था क्या 5 किलोमीटर पर आवर सपोज, ये 10 है, ये 15, देन 20, देन 25, ये स्पीड है और आउटपुट से। और आउटपुट तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ ओके ओके हो गया। अब देखो जब 1 में सेट किया तब स्पीड क्या आया, 5 आया, 2 में सेट किया 10 आया, 3 में सेट किया फैन का स्पीड 15 आया, 4 में सेट किया 20 आया, 5 में सेट किया 25 आया। तो यहाँ पर डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स निकल रहा है। यहाँ पर देखो तुम क्लियरली देख सकते हो। तो ये जो यूनिक आउटपुट एक ही निकलेगा। Remember just this word. In function mapping, the output will be unique. Okay, so when the output will be unique, then this mapping is called the function mapping. When the output will be different, that means there will be multiple outputs, then this mapping is called relation mapping. Remember this thing. Here you can see output is single here, is unique here. For one input, one output. One input, one output. Actually this output will be unique. Okay, so just no need to consider this input here, just see the output. Is it coming in the singular form? Okay, if the output is coming uniquely, this output is coming, then this function, this mapping is called the function as well. Okay, so यहाँ पर देखो जब तुमने इनपुट सेट किया है, ठीक है, अब इनपुट सेट करने के बाद यहाँ पर आउटपुट्स निकला। अब कंडीशन क्या होता है यहाँ पर, किस कंडीशन में ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो फैन चलेगा। मीन्स यहाँ पर कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन में देखो एक कंडीशन दिया जाएगा। ओके, तो रिलेशन में भी एक कंडीशन दिया गया था, उस कंडीशन को फॉलो करके हम लोगों को ये रिलेशन मैपिंग बनाना था। यहाँ पर द सेम थिंग विल बी हैपन in function mapping. One condition will be given. By following this given condition, we have to construct the mapping as well. Okay, so after constructing this mapping, we will get different kinds of order pairs. Okay, so just if you are actually constructing a mapping, bonding between two elements or two human beings, whatever it is, then a pair will be constructed. Okay, this pair is called order pair. That I think I had discussed this order pair and this all the things in our first video, first lecture number 1. So here input and the output. So mathematically in the function chapter, this output is called image. Remember this thing. Output cannot, this word cannot be used in mathematics as well. So in mathematics you have to use the word image. Okay, and this is pre-image. So as you all know, this pre-image and image. Okay, so as you all know, this I think you know these words, domain and range. Okay, and codomain also. Okay, domain क्या होता है, inputs, all the inputs will belong to a particular set, and this set is called the domain set. Remember this thing, that means this set is the domain set. Okay, and the range set means all the outputs will be comprised in one particular set, and this set is called the range set. Here you can see all the images, that means all the outputs belong to a particular set, that means B, and B is called the range set. Remember this thing, range set. और कोडोमेन सेट क्या होता है, ये हम लोग वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तब हम लोग कोडोमेन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जस्ट लो, कॉपी लो और पेन लो, शुरू करो।
यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या होता है, पहले जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, ओके, फंक्शन क्या होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, फंक्शन। नाउ अब दो सेट तो चाहिए। इफ ए एंड बी आर non-empty sets, then a mapping f, मैपिंग का नाम हम लोगों ने f दिया है क्योंकि ये फंक्शन चलता है, और रिलेशन में मैपिंग का नाम क्या है, r होता है। ठीक है, तो f ये कहां से कौन सा दोनों सेट के बीच काम कर रहा है, a to b। a ये है, ऐसे किसके तरफ जा रहा है, b की तरफ जा रहा है। देखो एरो का डायरेक्शन देखो, तो ऐसे कहाँ जा रहा है, b में जा रहा है, इसलिए एरो देखो ऐसे b में जा रहा है। दैट मींस ये इनपुट सेट और ये आउटपुट सेट, तो आउटपुट की तरफ ही तो एरो होगा ना। ठीक है ना, इनपुट पुट करोगे तभी तो आउटपुट निकलेगा। दैट मींस इनपुट आउटपुट। ओके, सो f एक मैपिंग है जो इज वर्किंग फ्रॉम a to b। Okay, that means A will be your input set and B will be your output set. Mapping. Then F mapping is given by, which is not defined as fx belongs to B. Okay, but all the output will belong to the set B. Just you can see all the values of fx belongs to the set B. For all x belongs to A. Okay? Huh? Here for every value of x belongs to A, there will be unique value or image in the second set. That is fx belongs to this type of mapping is called function mapping. Get it? That means for getting a function mapping, you have to use an input here, and you will get the output as well with respect to the given inputs. Okay, so after that all the outputs will be unique for the particular input values also. So here the same thing is written here, as you can see, and this type of mapping is called, when the output is going to be unique, this type of mapping is called function mapping. Okay, so that means x is the input value, fx is the output value, and fx, this output value, can be explained as the image as well. So when the image word will be used, then just remember this thing as output. Okay, so if you are getting the output, then there must have some input also. Okay, so is your function mapping. Okay, now one by one we will discuss the function, different types of functions here. Okay, so first one is, I think, what? First one, greatest integer function. Okay, greatest integer function. If A and B are two non-empty set and f such that A to B, ऐसे B की तरफ जा रहा है, which is
given by fx equals to box of x. Greatest integer function always denoted by box, not the equivalence class. This box will be used in the relation part. If this box will be used in the relation part, then it will be equivalence class. But in the function part, this will be the greatest or the smallest integer function. Okay, which is given by fx equals to box of x. ये box of x को बोला जाता है greatest integer function. Okay, for all value of x belongs to a. Okay. ऐसे जो x का वैल्यू तुम जो भी चूज करो, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, करने के बाद एक आंसर आएगा, वही आंसर होगा आउटपुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर fx equals to and that can be defined it's defined as fx equals to box of x less equals to x. Okay, for all x belongs to capital A. That means यहाँ पर fx का जब फंक्शन तुमने लिया है box of x, ठीक, तो यहाँ पर फंक्शन में इनपुट होगा, आउटपुट निकलेगा. तो इनपुट दैट मीन्स x का वैल्यू, और आउटपुट मिलेगा जब तुम x का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तब तुम्हें आउटपुट मिलेगा. लेस इक्वल्स टू क्या है, जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, लेस इक्वल्स टू x होगा. दैट मीन्स x का वैल्यू जो भी तुम चूज करोगे, डेसिमल वैल्यू चूज करो, इंटीजर वैल्यू चूज करो, क्या होगा, ये x का वैल्यू क्या होगा, ये बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, लेस इक्वल्स टू x. दैट मीन्स x का वैल्यू सपोज तुमने 2 चूज किया, ये जो बॉक्स ऑफ x का आंसर है ये 2 होगा या फिर 2 से छोटा ही होगा. दैट मीन्स आउटपुट जो है इनपुट से इक्वल होगा या फिर छोटा होगा. दैट मीन्स लेस इक्वल्स टू. लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. एग्जांपल लो, सपोज कैसे उसको बोला जाता है. जैसे सपोज fx इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x है हमारे पास. ठीक है, इफ हम लोगों ने x इक्वल्स टू सपोज 1.75 चूज किया, सपोज 1.75, तो fx इक्वल्स टू क्या होगा, बॉक्स में हम लोग 1.75 बिठाएंगे, इनपुट बिठाएंगे. बिठाने के बाद ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बॉक्स का काम क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज द इफेक्ट of this box. If I are using this box or this integer function, then what will be the outcome? Integer functions actually this the effect of using this box here in this function chapter. Always remember that whatever the value of x is, it may be decimal number, it may be integer number, whatever the number it is, the greatest integer function is to convert that input value into an integer. Okay, जो भी तुम चूज करो यहाँ पर x के जगह जो भी चूज करो, ये बॉक्स का काम क्या होता है, उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना. यहाँ पर 1.75 चूज किया, तो बॉक्स का काम क्या होता है, 1.75 को इंटीजर में चेंज कर देगा. 1.75 इंटीजर नहीं है, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी, उधर प्लस इन्फिनिटी. तो ये 1.75 तो इंटीजर नहीं है. अब क्या करेगा ये बॉक्स, 1.75 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. कैसे कन्वर्ट करेगा, ये तब तुम्हें देखना है कि जब तुमने बॉक्स यूज किया, सपोज 1.75, तुम्हें देखना है कि ये कौन सा दो इंटीजर के बीच लाई करता है. तो आई थिंक 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, तो 1.75 आई थिंक 1 और 2 के बीच लाई करता है कि नहीं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ग्रेटेस्ट में देखना यहाँ पर जो 1.75 है, नियरेस्ट कौन सा इंटीजर से ग्रेटर होता है. 1.75 नियरेस्ट कौन सा इंटीजर से ग्रेटर होता है, वो तुम्हें देखना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1.75 नियरेस्ट कौन सा इंटीजर 1 से ग्रेटर होता है. That means
बॉक्स ऑफ 1.75 का आंसर होगा 1 जब तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलोगे। ठीक है, अच्छा तुम यहाँ पर x का वैल्यू क्या चूज किया 1.75, और तुम्हें क्या होना चाहिए, देखो लेस इक्वल्स टू x होना चाहिए। तुम जो भी तुम x का वैल्यू चूज करोगे आंसर जो आएगा वो आंसर x से इक्वल या फिर x से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आया 1 आया। 1 क्या 1.75 से इनपुट क्या था, x का वैल्यू 1.75 था। अब 1.75 से 1 छोटा होता है या बड़ा होता है, ऑब्वियसली छोटा होता है, दैट मींस कंडीशन सेटिस्फाइड। सो जब तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलोगे, सपोज और एक एग्जांपल ले लो, सपोज 2.75, सपोज 2.75, तो ये होता है 2.75। ये 2.75 कौन सा दो इंटीजर के बीच लाई करता है, 2 एंड देन 3, यू कैन सी। तो यहाँ पर देखो 2.75 नियरेस्ट कौन सा इंटीजर से ग्रेटर होता है, यहाँ पर क्या होता है आंसर 2.75 नियरेस्ट कौन से इंटीजर से ग्रेटर होता है 2.75 2 से, आई थिंक आंसर इज 2 here. So that means the greatest integer function value of 2.75 is but 2. अब 2 देखो 2.75 से छोटा भी है, ये डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई भी कर रहा है, लेस इक्वल्स टू x होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मींस ये होता है तुम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब होता है देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में सेम डेफिनेशन भी लिखोगे, सेम सब कुछ लिखोगे। ठीक है, यहां पर भी सेम लिखोगे, बट यहां पर जो है ये साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो ग्रेटर इक्वल्स टू हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। यहां पर तुम लिख लो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन भी सेम है, एग्जांपल भी सेम लिखो, यहां पर ये लिखो, ठीक ये भी ठीक है, बट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में तुम्हें देखना है 2.75 नियरेस्ट कौन से इंटीजर से छोटा है। जैसे ग्रेटेस्ट में क्या दिखा था कि 2.75 नियरेस्ट कौन से इंटीजर से ग्रेटर है? तो वही हम लोगों ने लिखा था कि देखिए यहाँ पर 2 से ग्रेटर होता है 2.75, इसलिए आंसर इज 2। सो स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या होगा देखने के लिए 3 से छोटा दिखाई दे रहा है, दैट मींस आंसर इज 3 हियर। स्मॉलेस्ट इंटीजर में 3 होगा। तो यहाँ पर इतना ना सोच के जस्ट जो भी वैल्यू x का वैल्यू दिया जाएगा वो वैल्यू देखना कि कौन से 2 इंटीजर में लाई करता है। ठीक है, सो आफ्टर दैट द लोएस्ट इंटीजर विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू will be the smallest integer function. Okay, so that means the same thing, smallest integer function, you can see, and both the functions will be denoted by box. Okay, so and this greatest and just you may ask the question that how would you know that this function will be the greatest integer and the smallest integer function? How can you actually get the idea which one is greatest and which one is smallest here? Okay, so let me tell you one thing. In the question, if in the exam this type of question will come, then this will be given. Fx is the greatest integer function. Fx is the smallest integer function. Then you will get the idea. You can clearly get the idea that now we have to use this smallest integer function property, or we have to use the greatest integer function property as well. Okay, so here you can see 2 clear. Okay, हम लोग मूव कर ले। अगर कुछ डाउट है तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल डिस्कस इट अगेन। सो आई थिंक बहुत इजी है, सुंदर है, एग्री। नेक्स्ट कौन सा है, आई थिंक द 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन I think I discussed in lecture number 6. Different types of practical examples that I had chosen in lecture number 6. We can see the lecture number 6. Okay, it's very important, very interesting also. Okay. Now, just give the heading. Next heading. The next heading, 1-1 function. Okay, 1-1 function. Now, our next concept. 1-1 function. 1-1 function. ठीक है, 1-1 function. अब 1-1 function क्या होता है, थोड़ा साइड में जो है थोड़ा डायग्राम थोड़ा जो है ड्रॉ कर लिया।
ठीक है, ड्रॉ कर लो। स्टार्टिंग तो सेम ही होगा। इफ A and B are two non-empty set and F such that A to B, okay, then for one value of x, that means input कहाँ पर बिलोंग करता है? सेट A में, just you can see for one value, one particular value, no need to use, for one value of x there will be one value of fx belongs to this type of function is called one function. Okay? Okay? Now if I take an example here, यहाँ पर fx इक्वल्स टू सपोज तुम्हें एक फंक्शन दिया गया है, सपोज x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सपोज मैंने ले लिया रैंडमली, जस्ट आई हैव चूज। ओके, सो इफ आई चूज x इक्वल्स टू 1, so output will be fx will be 1 plus 1, that is 2, just 1 plus 1, so 2, x equals to 2, then fx will be 2 plus 1, that is 3, x equals to 3, then fx equals to 3 plus 1 equals to 4. If I proceed like this in a similar way, then I think just you can see these are all the input values, these are all the output values. Okay, so if I draw a mapping here देखो ये A सेट, इसमें इनपुट वैल्यू मैंने क्या लिया 1 2 3 और भी है, और B सेट में क्या होता है 2 3 4 और भी है। यहाँ पर x का वैल्यू, ये सब x का वैल्यू है, एज आई टोल्ड यू, ये आउटपुट है, इट मींस fx का वैल्यू है। तो देखो इनपुट एक चूज किया, आंसर क्या मिला 2 ही मिला। यहाँ पर 2 आंसर मिला था क्या, x का वैल्यू 1 चूज किया है, fx का वैल्यू 2 मिला था नहीं, only one unique value is there. So 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6, ऐसे मिलता रहेगा। और डायरेक्शन क्या होता है, ये जब इनपुट चूज करेंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा तुम्हें, ओके नहीं। तो दैट मीन्स हियर यू कैन सी for one value of x, output is 1. So there is 1 1 1 1 1 1 1 1. By continuing this process, you will get different types of order pairs. Okay, so here this type of mapping is called the 1 1 mapping, 1 1 function. Okay, clear? That means whenever you will put one input value, there will be one unique output value. Then this type of function is called 1 1 function. Just see the lecture number 6. In lecture number 6, I had chosen a practical example also, me and my father. Okay, I had chosen this example. Just you can see the lecture number 6, and the link will be given in the description. Okay. After that, many one function. Many one function. Okay. We just change the heading. Many one function. Okay, so यहाँ पर देखो many one function,
हम लोग डेफिनेशन में चले जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं. इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स for multiple, just use this word, multiple value of x, there will be one value of fx. This type of function is called just many one function. Okay? Just write the example. उसके बाद after that you can choose this example. Okay? अब जैसे हम लोग यहाँ पर बोलोगे सर, यहाँ पर आप लोग आपने जो ये जस्ट यू हैव टेकन यू हैव चूजन दिस regulator and fan, speed of fan, you have chosen this example. Okay, so you can ask the question that sir, in my home whatever the values and whatever the values is given in the regulator part, okay, so whatever I set on this regulator, the fan speed will not be changed, because I think the regulator is actually damaged now. Now you can see regulator में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 different inputs हैं, different inputs हैं, but ये A सेट, ये B सेट. फैन का स्पीड यहाँ पर जैसे सपोज क्या दिया था मैंने 5 10 15 20 25. These are all the value of fx, that is the output image. Okay, ठीक है. तो यहाँ पर देखो रेगुलेटर में ये जो डिविजन है, तुम जो भी whatever you can choose, the fan speed is going to be constant on 10 km/h. Just you can see, yes, you can see whatever the value on the regulator is set here, the fan speed is constant. Fan speed is not going to be changed with respect to the input values here. Okay, but output is fixed here. Output is 1. Output is what? 1. You can see output तो एक ही निकला है. देखो हर एक के लिए x का वैल्यू कुछ भी, इनपुट कुछ भी, आउटपुट तो एक ही निकला है. 1 1 is 1 value of fx. fx का कितना वैल्यू निकला? 1. So fx का तो यूनिक वैल्यू निकला. अब तुम बोलोगे सर ये इस टाइप का फंक्शन है. इस टाइप का फंक्शन जो है उसको बोला जाता है many one function. Okay, input and many values you are choosing as the input value, but the output is 1. So there is many one. Okay, many one. You can draw this diagram also. It means whatever the values of x you can choose, no problem, but the output will be 1 fixed value, 1 constant value. Okay, and that type of function is called the constant function also, because just whatever the value, whatever the input value it is, but the output value is not going to be changed, or the output value is fixed here. That's why this type of function is called the constant function. And the constant function always will be the many one function as well. Okay, so यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल चूज करूँ, सपोज एग्जांपल सपोज fx equals to x square. बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. ठीक, बेसिक से ही समझना इजी होता है. जब बेसिक क्लियर होगा, when the basic concept will be clear, then after that actually the advanced level questions can be done, no problem. Here for all x belongs to the real number. X belongs to the real number. That means from the real number set you can choose any value of x here. So now you can choose, if x equals to 1, then fx, if you choose 1 square, that is 1. If you choose x equals to 2 here, f of x equals to what? Just you can put the value of 2 square, that is 4. X equals to 3, then fx equals to 3 square, that is 9. If I just proceed the same steps further, then you will get the different kinds of inputs and different kind of outputs here. Okay, but if I choose here, just you can see just see here what is happening.
x equals to 1, fx is what? 1. Very good. X equals to minus 1, fx is what? 1 also, because minus 1 whole square is also 1. Am I right? So this means if I choose x equals to minus 2, fx equals to minus 2 whole square, that is 4. X equals to minus 3, that is fx equals to minus 3 whole square equals to 9. Proceeding this way. Just two sets A and B here. So 1, यहाँ पे देखो minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6, 9, राइट. तो यहाँ पर देखो माइनस 1 के लिए भी 1 आया, माइनस 1 के लिए भी 1 आया, 1 के लिए भी 1 आया. यू कैन सी माइनस 2 के लिए भी 4 आया, प्लस 2 के लिए भी 4 आया, माइनस 3 के लिए भी 9 आया, प्लस 3 के लिए भी 9 आया. So this type of function is called what? Many one function. That means many x का 2 वैल्यू निकल रहा है, but output is 1. You can see everywhere the output is unique. Output is not repeated. Okay, for the multiple values of x. That means यहाँ पर आप this not repeated actually. There will be no multiple values of x for one particular value of x. x का एक वैल्यू चूज कर रहे हो, fx का 2 वैल्यू निकल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है. यहाँ पर x का वैल्यू 2 3 चूज कर रहे हो, बट fx का वैल्यू आउटपुट क्या है, एक ही आ रहा है. दैट मीन्स ये फंक्शन जब आउटपुट यूनिक होता है, ठीक है. दैट मीन्स यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन. यू कैन सी क्लियरली, यू कैन सी द मेनी वन फंक्शन. ओके, मेनी वन फंक्शन. एम आई राइट? Now, after that, 1 1 हो गया, many 1 हो गया. उसके बाद हम लोग जाएंगे इसमें into and onto function. Very important concept. Okay, very important concept. Very important. Just पहला क्या है? Into. Suppose into function. Okay. यहाँ पर देखो, suppose if just लिख लो, हम लोग डिस्कस करेंगे. इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ सच दैट ए टू बी if for at least one value of fx, there will be no value of x. Then this function is called what? Into function. आपको लगेगा सर आपने क्या लिखा है यहाँ पर, है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 सेट करो. ए ये होता है बी. रेगुलेटर में कितना आता है? 1 2 3 4 5. रेगुलेटर में इतना ही होता है. 5 10 15 20 25 30. ओके, तो यहाँ पर देखो 1 5 हम लोगों ने 2 10 3 15 4 20 and 5 25. Okay, these are all inputs and these are all outputs. And this function that is
So here the into function is two sets will be there. In the first set input values will be there, in the second set output values will be there. Okay, so if you see at least one value in the second set, at least one value in the second set, that means as the output value, remember one thing, this in the second set at least one value in the second set is left मतलब बाकी रह गया, which has no input value, which has no input value in the first set में कोई input value नहीं है, लेकिन second set में क्या है, second set में एक output value extra रह गया है जिसका कोई भी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है. देखो यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, F1 2 3 4 5 हो गया, मैपिंग भी बन गया, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट, दैट मींस 30 is left here, and I think no mapping is there, and no element in the first set, that means no input value in the first set is left, which actually has the mapping with this 30 as well. Okay, so that means यहाँ पर एक देखो 30 एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गया है जिसका कोई भी मैपिंग और कोई भी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है. That means this type of mapping is called into mapping. हिंदी में शायद उसको बोला जाता है अंतःचित्रण. आई थिंक हिंदी मीडियम में अंतःचित्रण बोला जाता है इसको. ठीक है, देन ये होता है इंटो फंक्शन. ये होता है तुम लोगों का क्या, इंटो फंक्शन. इफ आई चूज एन एग्जाम्पल, if fx equals to, we are choosing an example here, fx equals to suppose x square, x belongs to natural number. Okay, so just you can see a and b, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 4 9 16 25 है. ये दो सेट तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें एज्यूम नहीं करना है. ऐसे जो भी क्वेश्चन हो कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज दिस इनटू फंक्शन, देन the set will be given, two sets will be given. Okay, so you need not to be worried about that. So the sets, the two sets, the complete set will be given in the question as well. So here देखो x square है, so यहाँ पर इनपुट एक एक करके हम चूज करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट इनपुट क्या है, 1, so there is 1. Just put the value of input value here. 1 square, that is what? 1 square means what? 1 square means 1, so 1 1. That is in it. 2 square, that means 4. 3 means 3 square, that is 9. 4 means 16. But unfortunately 25 is left here, which has no mapping with the input values as well. So that's why this type of mapping is called into mapping. ठीक है, okay. Now the next part is, next definition is what? Onto, O-N-T-O, onto function. Okay, just initially if for all values of fx belongs to b, there will be the value of x belongs to a. This function is called onto. Okay, that means according to the definition, they want to tell you that
In the second set, no element is going to be left which has no bonding or mapping with the first set elements as well. That means concisely you can say that in the second set, that means in the output set, no element or no value is going to be left. कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट में बाकी नहीं रहेगा जिसका कोई बॉन्डिंग और या फिर मैपिंग नहीं है फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ, दैट मींस इनपुट के साथ. ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, ये 30 को मैं कैंसिल कर देता हूँ. 30 नहीं है, सपोज सेट में सेकंड सेट में ये दो सेट जो क्वेश्चन में दिया गया, ये दो सेट ही दिया गया. होने के बाद देखना कि यहाँ पर देखो सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रह गया. So this mapping can be called as the onto mapping as well. Here the same thing here. You can choose this example also. You can ask me the question, sir, this two mapping is also 1-1 mapping. Okay, 1-1. Yes, it is possible that remember one thing, with 1-1, many 1. These two are different. Into onto, these two are different. Okay. One particular function, it may be 1-1 and onto, both. Okay, or many 1 and into, both. Okay, actually it is not sure before getting the question, before getting the function as well. You cannot get the idea that whether it will be 1-1 and onto, and what it will be only 1-1 or only onto. Just remember this thing, 1-1, many 1, different two concepts, into, onto, different two concepts. Okay, don't try to coincide these two different concepts here. Okay, तो यहाँ पर एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन 1-1 भी हो सकता है, onto भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. एक पर्टिकुलर फंक्शन many 1 भी हो सकता है, into भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे. तो ये 1-1 भी है, onto भी है, ये भी 1-1 है, onto भी है. ठीक है, पिछला जो into डेफिनेशन लिखा था उसमें 1-1 भी है, into भी है, इसमें 1-1 है, into भी है. ठीक है, हो गया. सो यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन. Bijective function, very important definition actually, and regarding this bijective function, in everywhere, in every board, one question used to come, prove that this function is bijective. Okay, so here this bijective function, bijective function. Okay. So here, if A and B, two different, not different, maybe same also, two sets, two non-empty sets, then F such that A to B, which is 1-1, which is 1-1 and onto, both, then this function is called bijective function. Here you can see one particular function. If one particular function will be both, that means 1-1 and onto, that means one particular function will satisfy both the properties. It will be 1-1 and onto also. Then this function is called the bijective function. That means if you will be provided the question in the exam that this function, just prove that this function, this given function, one function will be given, this function will be bijective. So if you want to get the bijective concept, you have to prove the 1-1 property and the onto property as well. Okay. So if the two functions, if a particular function will satisfy this 1-1
एंड ऑन टू बोथ, दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, तब ये फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, याद रहेगा। ठीक, सो दैट मीन्स यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट विल बी द डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, एंड डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ontoness and the one property. Okay, so and actually the next one I think the surjective property, surjective property. Surjective property, what? Surjective property. If a function f such that a to b, this is the style of writing a function as well. Function from a to b. A function is working from a to b. A is the input set, b is the output set. If a function f such that a to b and it is onto, only onto, then it is called surjective function. Here you can see, if a function will satisfy the ontoness property only, सिर्फ onto होगा एक फंक्शन, सिर्फ onto होगा, ना ही वो one होगा, ना ही वो many one होगा, ना ही वो into होगा, सिर्फ onto होगा, then this function is called surjective function. Okay, ठीक है, ये अलग प्रॉपर्टी नहीं है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ontoness चेक करना है तुम्हें। अब कैसे चेक करना है ये हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, then subjective function, then उसके बाद the next property is injective function. Injective function, injective, just write it, injective function. इंजेक्टिव क्या होता है, एक फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव function. If a function f such that a to b is 1 1, only 1 1, then it is called injective function. Okay, एक फंक्शन जब ये सिर्फ वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तभी उस फंक्शन को बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या प्रूव करना है, वेदर इट इज 1 1 और नॉट। ओके, 1 1 मतलब क्या है, x का वैल्यू 1, मतलब x का एक वैल्यू, इनपुट 1, आउटपुट भी 1 1 1 1। ओके, मेनी 1 क्या होता है, x का एक से ज्यादा वैल्यू, दैट मीन्स मेनी वैल्यूज बट द आउटपुट विल बी 1, एक ही मिलेगा, यूनिक। सो मेनी 1 1 1। सो 1 1 फंक्शन जब होगा तब ओनली उसको बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। सो हियर द डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन which will be given in the next actually this regarding this definitions and regarding this all the concepts, the different types of questions and different kinds of different level questions will be discussed, entrance level question and the board standard questions as well, and very very important also in CBSE 6 marks question used to come from this bijective property. Just you have to prove the bijective, whether it is bijective or not. Okay, very very important, and 4 marks question also. For the 4 marks it is very very important. So in this video that I have covered all the definitions and all the concepts regarding functions as well, and very small concept is left now, but this type of concept will be discussed while we will do the different questions as well. Okay, in the middle of the questions, the solving of these questions, we will discuss the different small concepts as well. Okay, so in this video just I think up to this last definition, the definitions should be completed in one video. And now if I start the question solving here, the video actually will become very long. So that's why in another video
we will prepare the questions as well, different types of questions. How can you prove the bijective property? How can you prove one? How can you get this ontoness? How can different types of conditions and different types of functions will be there. So yeah, here you can see it is, I think, the 9th lecture from this relation function chapter. So here we can see that this videos is not actually being seen by all the students. Just see the videos first, okay? See the lectures first. After getting the lecture, that just try to solve the questions by yourself. Then if you practice, if you would do the questions from yourself, by yourself, then you will get the idea where the weakness lies, okay? And in which property, in which concept that you are feeling feeling that you are lagging behind from the other students, that that this concept is not clear yet. Okay, just if this concept is not clear, then you can ask me the question as well in the comment section. And if just combining all the questions and all the doubts, I can prepare another video also. Just ask me the question if you have the doubt as well, and the doubt clearing session will be cleared in the doubt clearing class. Okay, so if you are not asking me the doubt, then how would you know? That means how could I know that the problem is going on in your mind? This problem lies on this chapter as well. When while you are solving the questions as well, the different types of problems is arising. So I have to know this thing. So if you are not practicing, if you are not doing the questions as well, just you have to practice each and every questions properly. Then in the doubt clearing class, all the things and all the concept will be clear. And I am giving you the assurance also that all the things I will make you clear. Okay, so, and just remember one thing: in CBSE, in state boards, whatever I will do and whatever I will solve the questions in board standard, all the questions will be common in your exam, and 100 marks will be common. And it is just I am giving you the assurance, because I am giving you the assurance from what? Because it is my 14th year of my teaching career, and I have been teaching for the 14 years as well. Okay, from 2005 and 6, just I have started my teaching career, teaching profession. So that's why many students, thousands of students have passed. They have cracked their different competitive exam, have got their board exams as well. Very impressive results they have achieved from my hand. So my students, they are working in various multiple companies, and some students they have completed their MD also, and some students are actually have completed their MTech. Now they are doing their works in different multinational companies, and some students are teachers also. Okay, they are teaching. Okay, so from my experience, just I am sharing my views, and I am sharing my experience with each and everyone. Just do whatever I will tell you. Just solve the questions, whatever I will give the questions as well in the in PDF format. Okay, just let me go to my working place after this lockdown. Then the various books I have in my home, not home actually, in my working place. Okay, home is here, but there different kinds of books I have. Different publishers books are there. So in different publisher book, I can collect the different questions, board standard questions, entrance standard questions, different kinds of questions and different kinds of question. I will prepare the entrance videos, entrance studies videos separately. Okay, so let me go to my place. Then setup, the well setup is also there, and just actually this is the temporary setup. Okay, because I am stuck at my home now. So after that, all the problems and all the things will be sorted out. So before that, try to attend all the classes every day, at least one or at least two videos actually is getting uploaded. So
your duty is to listen the videos as well, and just solve the questions eh, regarding the solutions whatever is done in the class. So just try to solve the questions as well. Okay, so if you like my video, just press the like button and subscribe my channel and push the bell icon as well. Okay, so here I'm Movik Roy. Just bye. In our next video we'll meet again, and we will discuss different kind of questions as well. Okay, Jai Hind.